बातें पूछी जाएंगी। गिव मी 5 traits of yours, आपके 5 मेजर ट्रेड्स क्या हैं। वहां पर आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, that will be always very very taken in very positive sense for you. All right, second is struggle. Third is self belief तो रख ली my dear, स्ट्रगल के लिए भी आप रेडी हैं, पर एक चीज की आपके अंदर कमी है अभी भी, that is what is called determination. How much determined are you? When we see, when India was रजवाड़ों का देश था और राजा ही राजा थे, या बीच में होलकर है, उधर सिंधिया है, उधर नवाब हैं, और उन सबके ऊपर बैठे मुगल्स हैं, इधर राजपूत हैं, and they all different things. जोधपुर, जयपुर, and जैसलमेर, all forts that you visit today, एक समय था जब बिल्कुल आबाद थे सब, अकेला शहर के अपने आप में, and all that. तो आप क्या सोचते हैं कि कोई एक किंग ने दूसरे किंग पे अटैक किया, वो पहले अटैक पे जीत गया, पूरी तरह हाथ होते थे, उसके बाद फिर से जुड़ते थे, उसे सीखते थे, क्या सीखते थे? पहली सेल्फ बिलीफ आती थी, नहीं नहीं जीतूंगा। सेकंड, ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ी मुश्किलात होगी, पर लेट मी रिमेन डिटरमिन्ड दैट आई विल विन। सो these things go side by side. आपको मैं डिटरमिन्ड हूँ, पर मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ बड़ी कम है, कुछ नहीं हो सकता। These two things are like the 4 tires of a car. आपको मेरे 3 टायर तो बहुत बढ़िया एकदम नए ब्रांड न्यू से निकलवाए भी मैंने लगवाए हैं, एक सर बिल्कुल खलास है, 10-12 पंक्चर हुए हैं उसमें, एंड एब्सोल्युटली गॉन। आप नोट करेंगे आपकी गाड़ी की जो स्मूथनेस थी वो बिकॉज ऑफ दैट वन टायर वुड नेवर बी स्मूथ, इट वुड ऑलवेज गिव यू अ बॉकी राइड। So these two things are necessarily, involved and are required for you to be present with you in totality. Can you open the windows? जब तक AC नहीं आ रहा है, हाँ बेटा इसको आप ओपन कर दीजिए। साइड से प्लीज एक विंडो ओपन कर दो, कोई भी वाले से। It will be much better, yeah. यहाँ के भी कर दीजिए। इधर भी कर दीजिए। Just get up somebody and open that. The moment it comes, हमारा ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ऑन नहीं होते हो। नहीं मैं कुछ भी ऑटोमेटिक क्यों होंगे? हाँ जी। The moment light will come. हाँ, ऑटोमेटिक से चलते हैं। All right. I'll give you a nice story about determination. Some of you might have heard it in my last PDP. I love this one. एक गांव था, उसमें दोनों चीजें आएंगी, उसमें स्ट्रगल भी आएगा, उसमें डिटर्मिनेशन भी आएगी। वो पूरा गांव कुम्हारों का गांव था। कुम्हार जानते ही हम, मिट्टी के बर्तन बनाते, तो उसमें कुछ नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी भरी हुई कुम्हारों के घरों के बाहर, लोड्स एंड लोड, माउंट्स ऑफ मिट्टी, बहुत सारे गधे थे जिनके वो अपनी हाट में ले जाते थे अपने बर्तन बना करके आसपास के गांवों में बेचने के लिए। बहुत बरसात हुई थी, एक गांव में सूखा कुआं था और उस कुएं के आसपास बहुत ज्यादा घास उगाई थी। तो व्हाट हैपेंड, बहुत सारी घास उगाई थी, तो उन्होंने देखा कि क्या कटवाया जाए, कुछ सोचा क्या ठीक है, नो हैसल्स, अभी बरसात खत्म हो जाएगी तब कर लेंगे। परंतु बैड लक था कि एक गधा, एक कुम्हार का जो उधर से गुजर रहा था घास खाता हुआ, वो somehow slips and he falls into the well. वो कुएं में गिर जाता है। अब जब वो कुएं में गिर जाता है और कुआं जो है वो नीचे खास था नहीं, उससे पानी भी नहीं था, नीचे मूटी थी, आपकी बिल्कुल धसी हुई जमीन सी थी, there was no water, it was a dried well. So he falls flat on there, so he injures himself very badly, and because of injury and because it wants to come out, कितने ही जंप कर रहा है अपनी इंजरी के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल सकता, तो इट स्टार्ट्स ब्रोइंग। जैसे डॉग्स बार्क करते हैं, लायंस रोर करते हैं, डंकीज और म्यूल्स कहते हैं खच्चरों को, डंकीज और म्यूल्स का जो बोलना होता है उसे ब्रोइंग कहते हैं, BREWING।
ओके, डंकी क्रॉस। और अगर आपने कभी ये आवाज सुनी होगा, कभी हिल स्टेशन में गए और बाई चांस वहां पर जो खच्चर वगैरह होते हैं, घोड़ों की आवाज अलग होती है, घोड़े हिनाते हैं, ओके, दैट इज अ डिफरेंट वॉइस ऑल टुगेदर, बट डंकीज हैव अ वेरी डिफरेंट वॉइस फ्रॉम द हॉर्सेस, एंड दैट इज वेरी वेरी श्रीकी, बहुत ही श्रीकी आवाज होती है, which goes up to kilometers, you can hear that voice, especially अगर हिल्स में होंगे तो आपको अक्रॉस द हिल भी आवाज सुनाई देगी। तो एक सांस ड्रॉइंग रोने चीखने लगा अपने अंदर, तो उसकी आवाज पूरे गांव में फैलने लग गई। गांव वाले आए, अंधेरा हो चुका था, उन्होंने बड़ी कोशिश की किसी तरह से निकाल नहीं पा रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे, तो फाइनली उन्होंने थॉट इज, और वो उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, वो रोया जा रहा था, चीखा जा रहा था, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन फाइनली। तो फाइनली दे थिंक, ओके, देयर इज नो वे आउट, देयर इज जस्ट नो वे आउट, लेट्स डू वन थिंग। ईश्वर का यही मानना था, लेट्स पुट moulds of mud onto him and let him go to the God, दफना देते, मिट्टी डाल दो। This brought, क्योंकि पूरा गांव ही कुम्हारों का मिट्टी भरी हुई है घर के बाहर, just they brought big mounds of mud and they threw into the river. जैसे ही उतना सारा मड इकट्ठा गिरा, डंकी बेचारा ऑलरेडी बहुत इंजर्ड था, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था अपने आप से, और ये उसके लिए एक और बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया कि डिस्पाइट बीइंग हेल्प, उसे लगा ये तो क्या मेरे ऊपर और चोट पहुंचा रहे हैं मुझे, एंड दिस इज इट, बट ही हैड अ वेरी स्ट्रांग सेल्फ बिलीफ, आई एम नॉट टू डाई, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उसकी सेल्फ बिलीफ थी कि मुझे मरना नहीं है, I have to remain alive, come what may, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। वो समझ गया मुझे क्या कर रहे हैं मेरे साथ, उसकी सेकंड कॉन्शियसनेस को बता दिया कि ओके, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू विद मी, मे बी आउट ऑफ डिफॉल्ट। ऐसे ना लाइफ में दो चीजें होती हैं, चॉइस, डिफॉल्ट। कोई भागना नहीं चाहता, अब क्या करें, यही करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट। सो व्हाट ही डज इट, ही शट्स हिमसेल्फ। Suddenly an idea springs into his mind, because of his self-belief to remain on and alive. He absolutely shuts himself from whatever हिम्मत जुटाकर करके, and slowly जो इतनी मड गिर गई थी वो उससे निकल करके बाहर आकर के अब इस पे पड़ा हुआ, and starts drawing again. The whole गांव वाला was thought के चुप हो गया था कि ऐसे suddenly oh God is again started drawing, and it's alive. They again brought big thud of mud, and again threw. He again repeated the same action. He came here. He again started drawing badly. He again threw mud in the night because nothing was visible. He had come here, and then he could spring up and he jumped up. Understand now? Every mound of mud being thrown of him was giving him pains. He was struggling to come out of it, but he struggled to come out of it. He struggled because he was determined to live, and he had a self-belief that yes, I would live. Okay? Believe me, nobody. I always feel very bad whenever there is a war. But I know my subconscious, believe me, that I was talking to my wife in the morning, reading the newspaper. I was to rush to the airport, and sorry, my dear, I late to work. I'm a very punctual guy that day, 10:30 means 10:30. But I had to be at the airport for some very emergent work with the family. And at 5 o'clock I was asked today because I was to be at the airport by around 7:30. So I was having a chai with my wife. And of course, newspaper I had in the I was going through the online thing only, or the last time. And it was very sad to note about the war between Israel and the Hamas, or the so-called Palestine terrorist organization of Palestine. Too bad. I have seen some of the wars with my own eyes, especially the 1991 war of Iraq. Saddam Hussein was the president, और जब पूरी अलाइड फोर्स ने, मतलब इमेजिन करो, पूरी अलाइड फोर्स कौन थी? अमेरिका,
and Cold War खत्म हो चुकी थी. America, Russia, your Japan, Italy, Germany, UK, France, Spain. Which country was not there in the Allied force? And they were together and they attacked one simple straight country by the name Iraq. A beautiful country, Mesopotamian civilization of thousands of years, and destroyed and finished in just 1 week. Rather than 15th January 1991, that in itself, finished the country, believe me. Anyway, bad wars are always bad. So what I'm trying to say, no warrior, no military man ever goes to a war thinking that he will be killed by the enemy. अगर ये थॉट उसके अंदर आ जाए ना, मुझे आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे मार दिया जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा. उसके अंदर सोच आ ही नहीं पाएगी. So this is something which is to be understood. I will come on to the fourth. Close the door. Nobody will make a move out now. Anybody wants to use the washroom and all? When you will be free, you leave for the washroom at that point of time. I don't like people getting up in between. Close the door. Himanshu, and just see that anybody who has gone out to the washroom, if they're coming back, let them come back. Anybody else won't go. Yeah, we'll bet. Fourth is new generation. This I'm talking to you. मैं इसको ऐड नहीं करता, पर मैंने because I'm talking to you, you are the generation I'm talking to, you are the people I'm talking to. So I would add this one point. Anger. बंद करिए. Unnecessary खुंदकानी, गुस्सा आना, जो आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत घूट कर भर गया आपने. The generation that you are. The generation that you are, this thing has come into you so much. You get pissed off so fast. You get irritated so fast. You get annoyed so fast. Irrespective that who's before you. You don't bother and things like that. No. आप फिर अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे. आप don't think having this thing in me and I'll reach there. No. Not at all. Just not at all. Personal ethos, personal egos, looking down upon others, making sarcasm of others, having unnecessarily anger in yourself. कहीं नहीं पहुंचोगे boss. With very sorry words I'm saying, literally कहीं नहीं पहुंचोगे like. Anger is one thing which can be devastating for you. Shed it. Immediately shed it. जितना जल्दी इसको आप शेड कर सकते हो, अपने अंदर से निकाल के बिल्कुल बाहर फेंकिए. Try to bring composure, calmness into your personalities, which is what is required today. Anger is a small, it's kind of a slow poison thing. आप अपने आप को slow poison करते हो, and slowly you get into that. You're consuming it on a daily basis, and उसका outcome आपको पता चलेगा जिससे वो अपना action देना शुरू करता है. I'll give you an example. There's a small boy who used to get very angry. He used to get very angry. So his father said कि okay, teachers बुलाती थी कि बहुत सी unnecessary बच्चा बहुत class में he gets irritated, he makes a lot of brawls with other students, etc., etc. So the father calls this boy and says to him, "Bhai, listen, John, क्या problem?" He says, "Dad, मुझे मालूम है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, and I want to control my anger, but somehow I'm not able to control it. I don't know why, so it just comes out." He says, "Okay, I'll help you out." So what he does is he brings a box of nails, किलो का एक डिब्बा लाता है बाहर, एक हैमर देता है उसे. वो कहते हैं ये वाला मेरे वाला जो रूम है ना स्टडी का, ये बॉल आज से तुम्हारी होगी. जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, आकर कर एक इसमें नेल जो है कील ठोक देना. Just put it inside the ball.
जब भी तुम्हें गुस्सा फील हो रहा हो, इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा निकले, just put it on the hammer and put it on the wall and put the nail inside the wall. This is okay, Dad. And there are 250 nails in it. And this is around say after 40-45 days, the boy comes to the father and he says, Dad, I feel that are you there with your cell? Sadaji, can you give your cell to me? आपका सेल मुझे दे दीजिए, मैं भी तो आपका सेल यूज कर दूं। तो why you looking down? कलेक्ट कर लो हिमांशु सर। It's okay, no, it's okay. Now remain attentive. What's your name? मनमेर सिंह, आप अटेंटिव हो जाइए। मैंने आपको शुरू में ही आपको सबको दे दिया था, कभी आप मेरे साथ बहुत इंटरेक्शंस करोगे 3 साल में। नेक्स्ट टाइम जब मैं बात बोलूंगी, जो यहाँ पर इंटरेस्टेड है बाहर निकल जाए, वो लिटरली निकल जाया करे, जाकर बैठा ना करे। ये होता है, I break my tempo when I speak. Okay. So the guy comes back after some time. Please get seated. I'm handing. The boy comes to the father. He says, Dad, ये तो खत्म हो गया. I've put all the 250 nails on the wall. But I've started controlling my anger like anything. अब मुझे उतना नहीं आता. But Dad, अभी भी पूरा control नहीं हुआ. अभी मुझे आता है गुस्सा. The dad in the evening drinks another box. No, Dad in the evening gives him a glass now. He says, अब तुम्हें जब भी गुस्सा है ना, वो जो तुमने इतनी अंदर तक उसको वॉल में डाला हुआ है, it will take time, it will take energy from you. अब जब भी तुम्हें गुस्सा है, तुम एक नेल बाहर निकाल दिया। Started doing that then. अभी पूरी नेल्स खत्म ही हुई होंगी, 3-4 अभी रह गई थी। The son comes to the father and says, Dad, I feel now I don't feel angry at all. मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा. I don't get irritated. I don't do this. I don't do that. He says, okay, come with me, my son. He takes the son to that wall. बोले तुम ठीक हो गए हो, my dear, but look at this wall. What you've done with this wall? What has happened with this wall? Can you have a look at this wall? बोले this is what happens when you get angry and you blast your anger on others. They are always harmful lives, not to be corrected. It harms them because the words that you speak, the actions that you take, they always remain in the back of somebody's mind. They never wither away. One may forgive you, but not that forgets that. That's a fact, human psychology. इंसान भूल किसी चीज को माफ कर सकता है कि ठीक है माफ किया तुम्हें, पर उस बात को भूल चुका हो भूलता कभी नहीं है। कहीं subconscious में that thing always remains on. So this is one thing. Shed your anger. Again, the generation that you are, I would say you all are adults. You all definitely would be first year के students हो, 18 plus होने चाहिए. कुछ नहीं होंगे जो होने वाले होंगे बिल्कुल. So what I mean to say is you all are into an age, जिस age में आप लोग सब हो, एक span of life आप लोगों ने जी लिया, which is your school life. और जिस स्टेज में इस समय पहुंचे हुए हो, उसमें 2 चीजें होती हैं कि आपके अंदर कुछ हैबिट्स आ चुकी होती हैं. And it's an old saying that old habits they die. What? What is the saying in English and all? Old habits die. Nobody knows. It says old habits die hard. बहुत मुश्किल होता है जो आपकी बहुत ही पुरानी आदत पड़ चुकी हो, उसे छोड़ना है, उसे लीव कर देना, it is very difficult. So before that habit becomes a part of your life, many examples नहीं लेना चाहता, वो किसी भी तरह की habit हो सकती है, which is not very good, which is not healthy, which is not positive. Shed it. Because then you get habitual. After habitual हो जाते हो उस habit को अपने साथ carry on करने के. I give you a beautiful example. एक कोल्ड टेरेन थी, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट, उसके बीच में बिल्कुल एक बर्फीली नदी बहती थी, और इधर एक साइड पे बिल्कुल ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी साइड में थोड़ा नदी का पड़ाव. तो उस साइड में
जहाँ पर पहाड़ नहीं थे, राइट, वहां पर एक टर्टल रहता है। टर्टल इज बड़ा वाला कछुआ। और इधर इस साइड में नदी के इस तरफ में एक केकड़ा रहता है, क्रैब। अब क्रैब जो इस साइड में, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया था, वहां पर धूप कभी नहीं रहती थी, सन यूज्ड टू कम लाइक दिस एंड यूज्ड टू सेट, and all winters it is all chill, there was no sun, while on that side of the river there used to be good sun. So the turtle would have a swim in that, frozen waters, and then he would come, he would flatter his wings, all the four outside, and pause and all, and अपने मस्ती से वो धूप सेकता। क्रैब उसे रोज रोज देखता था और अंदर से बहुत सोचता था, कम ऑन गॉड, आपने मेरे साथ क्या किया, मैं भी उस तरफ क्यों निकला, मैं भी धूप सेकता हूँ अपने फ्रोजन टेम्परेचर्स में। So every day he would shout on him, "Hi friend, please come, have something. Hi friend, please come." उसे मालूम था बदमाश केकड़ा है, क्रैब है, इसको अपनी आदत से बाज नहीं आना। और आदत क्या? Which is a habit, which is a part of his life. He cannot stop it. He has to. डंक उसने मारना ही है। The crab has to, pierce you in some time. वो रह ही नहीं सकता। That is this basic, instinct. Cannot be without it. It will bite you, and that will be poisonous. So he would say, "Please come up, listen to me." So one fine day he says, "Let me see यार, इतना बुलाता है, क्या चक्कर क्या है?" वो स्विम करता, वो उस तरफ तक जाता, बोलता है नदी के अंदर से, बोला, "Yes, what do you want?" बोला, "Please do one thing. मैं नदी में फ्लोट नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर बिठा करके उस साइड पे ले चलो। तो तुम भी जैसे रह रहे हो, I'll be so thankful to you, मैं भी वैसा रह लूँगा। I'll also live the same life. I'll also be able to sunbath myself every day. Please help me. Please take me to the other side of the river." He says, "See, I know. वैसे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पर जब मैं पानी में फ्लोट कर रहा होता हूँ, मेरे दोनों पैर और हाथ बाहर निकले होते हैं बॉडी से, और अगर तुमने मुझे वहां स्टिक कर लिया, तो that will be very bad." He says, "Listen to me. मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ." बोले, "क्या?" बोले, "अगर मैंने आपको स्टिक किया, तो आप नेचुरली डूबने लग जाओगे। जब आप डूबोगे, तो नेचुरली मैं तो आपके ऊपर ही बैठा हूँ, तो आपके ऊपर ही डिपेंड होकर के नदी को पार कर रहा हूँ। आप डूबोगे, साथ में मैं भी डूबूंगा। तो डू यू थिंक आई विल बाइट यू एट द कॉस्ट ऑफ माय ओन डेथ? मैं आपको बाइट क्यों करूंगा कि अपनी डेथ बुलाने के लिए? आई विल नॉट." He said, "No, I don't believe you." He soon started. वो रोज उसे बुलाए, "Come on, I have a logic. I told you my logic. I told you my logic." So one fine day, the turtle gives in. He says, "चलो यार, ले आते." So he swims. He says, "Okay, jump on my back." And he's taking the crab onto the other side of the river. And by the time he's taking the crab to the other side, what happens is, in the middle of the river, the crab says, "I'm not able to stop myself. I have to bite. I have to sting." Basically, it's stinging. He says, "What happens to your logic?" Well, he says, "Damn to logic. This is habit. And old habits, they die hard. I can't help it." Well, come on, I will die. Well, I know, so will I die. But I can't help it. So understand, my friends, old habits, they die hard. उसमें अपनी exit policy बनाओ. That is, when do you wish to get out of your bad habits, and when do you wish to exit out of it? Exit policy has to be very, very strong. किसी भी एज में हो सकती है। हो सकता है युगांक चतुर्वेदी ने इस एज में आकर के अभी एक हफ्ते पहले अपने आप को किसी चीज से एग्जिट किया हो एकदम से। You come what may, not from today morning. Okay? It may be anything in life where you feel, "Come on, enough." That's okay. So, exit is never too late, but it's always little late if carried too long. I give you another example. And anyone who was seated here will not answer me in the last few minutes. Tell me, you heard about which is the creature? We have some mementos. Okay. Anybody will answer me right. अगर जिसने भी right answer जवाब दिया, I'll give him or her a memento in the last. Okay? That's how I will. Now tell me,
The question is, एक क्रिएचर ऐसा है दुनिया में जैसे हम हैं इंसान, पर आप इंसान को अभी यहाँ से ले जाकर एकदम साइबेरिया में रख दो और आपने अगर 10 बुलेट्स की वार्निंग ग्रिटनी लगाई होगी अपने ऊपर तो आप जम जाओगे. Your blood would get absolutely within minutes you will know more, very frankly speaking. कि आप -80 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको खड़ा कर देगा तो मैक्सिमम within 10 minutes one is no more, right? That is one thing. Now, which is the creature in the world which can adjust itself to the temperature, the maximum? Yeah? Penguin. Penguin? No, not at all. अगर वो ठंड में उतना रह सकती है पेंगुइन तो सोचते हो कि दुबई में रह लेगी. Not at all. मतलब whether it is cold or it is hot, they are able to adjust their body temperature. Cockroach. No, cockroach. Cockroach does it very well. But you know, cockroach hibernates. Cockroaches they hibernate जब आपकी बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, वो अपने कहीं पर hibernate कर जाते हैं. Like कोई और आंसर बोलेगा तब मैं आपका एग्जांपल दूंगा. Yes. Frog. Yeah. Okay, I'm coming on that. Yes. Seas. Seed. Seed, no, again no. Seed cannot take hot temperature. Seed is an Arctic. It's an Arctic animal. Like penguins are Antarctica animals basically. But and seed is Arctic. वो Arctic में उतनी minus degrees में पहुँची जाओ इनमें सवाल ही नहीं उठता. If you have been to Dubai and if you go to the Dubai Mall, you have a massive enclosure there which is all a frozen area being made. There they have penguins absolutely brought from Antarctica who are very much over there. But उस माहौल को बिल्कुल वो -30 डिग्री का बनाया हुआ enclosure को. Yeah. Dolphins, no, same thing. I said penguins, seal and dolphins, same thing. Polar bears can never come to Delhi temperature even, they will die in Delhi. Anyway, thank you. What's your name? Anshika. Anshika Arora. Huh? Right. So Anshika is absolutely right. Just stand up and clap for her, please. Anshika, I will give you a seminar in the last, okay? It is the frog. मेंढक. और मेंढक की भी, can you believe it? The maximum species, varieties, किसी living creature के अगर दुनिया में है, that is frog. So amazing. क्या आपको मालूम है? I'm not talking of insects. Otherwise, you have a lot of butterflies and such things also, which are more species around the world. But when you talk of living beings towards the mammals part, all frogs are not considered mammals because their reproductions and their organ ways are different. They are called amphibians. जो कि parent species है, that is amphibians. Frogs, your toads, and all such things which is nearby this. So frog जो है वो temperature से maximum अपने आप को adjust कर सकता है. अब सोचो. Okay. This is full with water और इसको आप एक ओवन पे रखा और आपने नीचे आग लगा. अब ओवन का पानी जो 0 डिग्री पे था वो गर्म होना शुरू हो चुका है. It started getting hot, hot, hot and hot. आपने एक मेंढक को उठाया और आपने इस पानी में डाल दिया. अब मेंढक पानी के अंदर है, पानी गर्म हो रहा है. पानी का टेम्परेचर जो है 40 से 50, 50 से 60 या 70 पे गया, 80 पे जाकर के मेंढक को थोड़ी सी अनकंफर्टनेस फील हुई और अब उसने अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू किया एज पर द हीट ऑफ द वाटर. एज पर द हीट ऑफ द वाटर उसने अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू किया बॉडी के और वो धीमे धीमे एडजस्ट होने लगा. पानी 100 डिग्री पे पहुंच गया, उसने एडजस्ट फर्दर किया एंड देन व्हाट हैपेंस, जो टेम्परेचर क्योंकि अगर 100 is not a limit, if it keep on boiling, it will keep on increasing, it will keep on increasing and keep on increasing. तो आपने ओवन को बंद नहीं किया and it is keeping on increasing, it's increasing and increasing. And now there comes a limit where the frog is becoming little bit uncomfortable, right? And it wants to jump out, which is exit. It wants to exit from that boiling hot water.
He just wants to jump out of it. बट अब वो जंप कर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर जितनी एनर्जी थी ना वो उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में लगा। अगर जब पानी 70-80 डिग्री का था और तभी जंप कर जाता तब उसके अंदर एनर्जी थी जंप पार्ट करने की। अब उसके अंदर एनर्जी नहीं, वो मस्त है इस समय। उसके अंदर जितनी एनर्जी थी इट्स ऑलरेडी बीन कंज्यूम्ड in adjusting to the hot temperature in which he is in for the last 5 minutes or 7 minutes. So believe me, there's always a time for you to make an exit and must know when to exit. Not to exit when you have already devoid all your resources. Not to avoid exit when you have already fallen flat. Exit when you are already steady, you are on the ground and you can make an out. So these are few things. Last I would say, last. जिंदगी में बहुत चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती जो आप कर सकते हो, करवा सकते हो अगर आपके अंदर एक प्यार का भाव हो। Believe me on this. Feeling of love is so important for you to remain a human being. Humanitarian values and all that is essentially required today. In the competitive world of ours, जिस competitive world में हम लोग आज हैं, उस रेस में हम कुछ चीजों को जो बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं और जो उससे आज भी थोड़ा जुड़ा रहता है, believe me, remains happier. Finally, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप सब पढ़ रहे हैं, बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, want to get married, want to have your own families tomorrow. Definitely, that is what is the ambition that one generally keeps in one's life, right? But in the process, believe me, how much human values are you carrying into yourselves? Finally, सब चीजें किस में? अगर आप समझ सके, what is the ultimate goal in life? Ultimate goal क्या है तुम्हारा? कोई मुझसे कहे, सर मेरा ultimate goal है बहुत पैसे कमाना। अभी कोविड ने दिखा दिया आइडिया। जो लोग शंखपति थे ना, जर्मनी में, इटली में, यहाँ पर अब्रॉड रहा हूँ 8 साल तक यूरोप में। And I've seen these corporates, I've worked with these corporates like BCom and all. And you can't imagine the kind of money people these people are. So nothing could stop death in the COVID times to one and all. No money could save anybody. Just no money. The money is not the ultimate, it is very essential. Not the ultimate. You say health, very important. But if you have health, but you're unhappy because of your relationship with your wife, maybe with your spouse, maybe with anybody else, again, that health is of no use, your health will start deteriorating. So finally, if you मुझसे पूछे Yugank Chaturvedi, what is your ultimate goal in life? I would say happiness. Happiness is the ultimate goal in life. Agar I'm happy, that means I'm healthy. I have that much of money. I'm maintaining that kind of good relations that I need to have, which makes me feel happy. So finally, my ultimate goal should be happiness. So in case you also start striving for happiness in life, if you start striving for happiness in life, what all you require is shed away your anger, exit from your bad habits, keep love for others, and this is what will make you come down to achieve your dreams finally. Example, there is this Christmas party coming and there is this family, they are बहुत hardship में जी रही है. The father जो है, he wants to present his daughter something, but he is without job for a long time, massive recession in the country, and things like that. Wife की death हो चुकी है, घर में एक बेटी है, and the small girl also wants to present something to the father on the Christmas Eve. So this girl, the day the father comes back from, looking for some job, searching for some job, the girl comes to him in the late evening and says, "Dad, this is your Christmas present." The father thinks there was no money in the house. Maybe she would have asked for something very strange. But still he says, "Okay, thank you, beta." Thinking कुछ घर की चीज उठा करके पैक करके दी होगी. वो भी देखा जिसने पैक की हुई, that is okay. वो तो पीछे पड़ा था एक कागज, उसमें किया पैक. But he accepts it with great love. And he goes to his room out of extreme curiosity. The father wants to see क्या है इसके अंदर. He opens that and there is a box.
there's a wooden box which is knows कि ये तो हमारे जो डाइनिंग टेबल है उसके कोने में रखा हुआ था बहुत दिनों से unused. So he opens it. Maybe she's put something inside. He opens it and there's nothing. It's an empty box which was lying on the dining table in the house for a good number of days, unused. And the small daughter has packed it and has gifted it to the father. The father goes to the daughter and he says, "My dear darling, thanks so much for the gift that you've given, but I'm a little surprised. The box that you gave me is all empty." The beautiful reply which moved me, when I went to this reading somewhere, which I'm sharing with you all, my dears, it moved me. The one-liner that the girl said back to the father is, "Dad, please don't consider it empty. I blew 100 kisses into it." Okay? So this is what is the feeling. Dad is saying empty मत समझना, मैंने इसके अंदर 100 kisses fly किए हैं आपके लिए. So this is what is called love. This is what is called emotions. This is what is called, which I would love you people to definitely have in you. The moment that is thing in you, आपकी personality बदल जाएगी बच्चों. आपका पूरा दुनिया को देखने का outlook बदल जाएगा. You will start looking at things most positively then. And this is from where, the moment you become positive, the moment you start looking at things positively, जहां आपने एक ही शुरुआत की, आप अपने करियर की, अपने पाथ के उधर अग्रसर हो गए. Don't just think only academics will bring everything to you. Bringing all these traits simultaneously will bring the ultimate goal that you're striving for. Okay? So this is it. I won't talk about skills more. As such, I can keep talking of skills and skills and skills. But this is, I think, self-belief, struggle, determination. Stop your anger, stop bad habits. Why I said this all is, there are 3 kinds of people I believe in life, okay? So, I would say that, are you an egg? Are you a potato? Or are you your tea leaves? Anda? Aloo? मुझे ही मालूम नहीं हो. Okay. Are you an egg? Are you a potato? Or are you a tea leaves? And that's what I'm trying to say. Take 3 bowls again. Put it on heat. Put 1 egg in this, 1 aloo in this, and some tea leaves in this. Make it to boil. यही अंडा जो है, पहले जो बहुत ब्रिटल दिख रहा था अपनी पर्सनालिटी में, जो उसका वजूद था, वो ऐसा वजूद था कि आप ऐसे तेजी से हाथ से दबाओ तो खत्म, it is finished. Okay? The moment it is boiled, the moment it goes through some struggle, it becomes so hard that now you can't do the same thing with it. Same with the potato, which was so hard. Otherwise, अपनी appearance में, look में और सब चीजों में वो looking very hard to you. But the moment you boil it, it has become absolutely nothing. Yeah, you just crunch it like anything. This tea is a very different thing it did to the water. The moment it is put into the water, it just change the complete flavor and taste of the water. From lifeless water to just from being water, it's become tea, which can be very well consumed. So what are you? Are you somebody who looks as such very weak but you're very strong inside? Are you somebody who is very strong who looks otherwise but very weak inside? Are you somebody who, whatever be appearing, but when you are added to a situation or a circumstance, you can really change the complete scenario and the complete, posture of that situation and can make it absolutely look beautiful? This is you. You have to think, not me, not your friend. It is you who has to think about it, that what is you. The worst thing that we do today in our lives is हम कभी भी अपना self evaluation नहीं करते. हम एक स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर करके उसके कर्लिंग वाटर्स को देखते हुए एक दूसरे में टप्पे मार सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं, and we are very happy about the fact, oh great. But अगर स्विमिंग पूल को literally enjoy करना ना, then jump into it. उस समय पता चलेगा
if you are not a swimmer, वही पूल जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा था ना, वो आपको बहुत गंदा प्रतीत होने लगेगा, बिकॉज आपको अंदर छटपटाहट फील होने लगेगी, मैं इससे कब बाहर निकाला जाऊंगा, या कब बाहर निकल सकता हूँ. So until and unless you do not, start speaking to yourself, आत्मविश्लेषण कहलाता है हिंदी में. आप जब तक अपना आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि वो अपने व्यूज आपके बारे में बताएं कि आप क्या हैं, और आप उन व्यूज पर जिंदा रहेंगे, which is very, very, very bad. This thing should never be done. I tell you what, myself, nobody can influence me in their life until unless I wish to get influenced by somebody. Okay? Bring these principles not in your life. Nobody. आज मुझे कोई आकर करके 3 लाख बातें बोलते, वो आपके लिए ऐसा कह रहे थे या वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं जिस व्यक्ति को जैसा मानता हूँ मैं उसको वैसे until I go through an experience and I go through it and then I change my views or I cement my views. Right? That should be the way. But since you all are starting your lives, ये जो मैं आपसे सब बातें कर रहा हूँ ना, if I share with you at the company Global India, I have been an orator with some of the most leading corporates. वहाँ जो मेरी ऑडियंस होती थी ना, they used to be very, very senior vice presidents and presidents and all that. And my complete texture of speaking to them used to be very different. They were already established people, and still there were a lot of things on which I used to speak to them, which again used to go in their seminar halls and all of their multi-dollar, multi-billion corporates, abroad has gone earlier, and then later on it was in India and Gurgaon and all. When these companies they blossomed in Gurgaon and so I'm talking this all to you because I feel this is what is relevant to you all. And before we have half an hour, it's 12:30, we'll finish it at dot 1. So half an hour more I'll take and I'll just switch over from the skills to something else. Can somebody help me and team in? Rohit, you come. I want somebody with good quotes. दम के साथ थोड़ा. Just get it. Okay, thank you. Okay, who would like to speak something with me? कौन बात करना चाहेगा? A seminar for you, another one. Let's change the complete scenario. Skills मैंने basic skills की बात की, detailed based skills की बात नहीं की. But I would go to details. We'll go in the next PDP. If you wish me to take another PDP. If you wish, must speak to your department. Please let me know. I'm always very happy. एक ही बात से दिल से शेयर कर रहा हूँ, जो बैचेस अब आ रहे हैं वो अपने आप को इन चीज़ों से पलायन कर रहे हैं. जो इससे पहले के बैचेस थे, मैं यहाँ से 10 साल से हूँ, जो पास आउट हो गए 2014 में, 2015 में, they are all established people today. They still speak to me, they still talk to me. Most of them are married, most of them have their children. They still speak to me, and they have had enough n number of PDPs and such sessions with me. And that is upon you, myself or anybody. The day you feel that we should have more of such interactions, we'll have it. Okay. Anyone of you please? Normal बात पूछूंगा मैं. कोई भी? Anyone? I'm not a Hawaiian friend to you. Anyone of you please stand up. Yeah, please. Great. Yeah, what's your name? Suhani. Suhani, today is Wednesday, right? Okay, tell me, Suhani, how did you spend your Sunday? So, I was in Noida with my family. I went to Noida with my family. This is how you spend your Sunday? I spent it with my family. Yeah. That is a background statement. How did you spend it? We got up in the morning, we went, we reached a little late. My cousins also came. Then we had lunch together. It was after a long time we had a family lunch together.
and things like that. Any such thoughts coming in the back of your mind? Okay, thank you so much, Sohani. This was just an example, but congratulations, Sohani. This is what is required in all of you. Have that initiative. जब तक initiative नहीं रखोगे, the drive in you, वही आपको force करेगी, trust करेगी आगे बढ़ने के लिए. Okay? Understand that point. Other than what I just spoke to you, वो सारे जो traits है ना, having love for people. मेरे को खुद मालूम है मेरे अंदर एक गंदी हैबिट है, मुझे इसको एग्जिट करना है इसमें से. वो मेरे अंदर मालूम है, दुनिया को नहीं मालूम. मेरे अंदर मुझे मालूम है सबके लिए बहुत प्यार की फीलिंग रहती है, और मुझे मालूम है उसको मैं लिख करके पेपर में एडवर्टाइज नहीं कर रहा. तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, सेल्फ बिलीफ, डिटरमिनेशन, नो एज एग्जिट पॉलिसी रखो, ये सारी अंदरूनी चीज़ें होती हैं. these are internal intrinsic skills. जो एक्सटर्नल स्किल्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली दिखेंगे, जो ऑब्वियसली आपको अपने अंदर इंक्रीज करने ही हैं, वो तो एड ऑन्स करेंगे. जो मैंने पहले बात की, दे वुड एड ऑन्स टू व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, उसमें फाइनली पहुंचोगे. परंतु जो स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए, जो एक्सटर्नली दिखेगा, इट स्टार्ट्स नंबर 1 विदाउट एनी सेकंड थॉट. इट इज कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल. ना डोंट थिंक कम्युनिकेशन स्किल की मतलब जैसे युगांक चतुर्वेदी यहाँ खड़े हुए हैं सर, वो एक इंग्लिश में हिंदी में आपसे बहुत अच्छे से बात करें, तो ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर. मे बी नॉट, बट आई वुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर इफ आई एम टॉकिंग इफेक्टिव, इफ आई एम टॉकिंग टू द पॉइंट, if I am absolutely within the periphery of what I am trying to speak, I know the content, etc., etc. There is not just one thing that you need to be having just one part of it and you are a great communicator. But communication skill is something so eminent, so basic. एक एथलीट के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए जिस तरह से एनर्जी का होना जरूरी है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो whether it's a basketball or a cricket or a football or anything, you are not to be selected. क्योंकि एनर्जी नहीं है बंदे में, एनर्जी लेस जो somebody है, वो स्पोर्ट्समैन क्या होएगा? Getting me? फिर फर्क हो जाता है, एक फुटबॉलर है और एक बास्केटबॉलर है, या एक वॉलीबॉलर है. एक वॉलीबॉलर ने अपने इतने से ग्राउंड में, जो उसका ग्राउंड है, ये जैसे ये इतने में उसने मैनेज करना है, उसमें भी उसकी पोजीशन होगी. एक फुटबॉलर के उसको पूरा ग्राउंड मैनेज करना है. There has to be absolutely honest goals. Running, maybe कई बार जो डिफेंस वाले होते हैं वो फॉरवर्ड तक पहुंचे हुए होते हैं. You do not know at what time you have to run, how much. So naturally उसकी जो एनर्जी है would be more to that. But naturally जो वॉलीबॉलर होगा उसकी जो पंचिंग स्किल होगी, जो उसके बाइसेप्स होंगे, would be definitely much more stronger than a footballer. फुटबॉलर के लेग्स की बाइसेप्स होंगी, नॉल होगी, उसकी डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी. ये स्पेसिफिक स्किल्स हो गई. परंतु when it comes to basic skill, एनर्जी में सब बराबर होंगे. मे बी फुटबॉलर थोड़ा ज्यादा होएगा, उसकी कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी. So this is what it is. Communication skill is a science. मेरे बच्चों, ये साइंस है. It is a science. Okay, use that. That's a rule. तरुण, आप कहाँ रहते हो? स्वतंत्र नगर में. कैसे आते हो? बाइक से. वेरी गुड. अब तरुण, एक ही बताओ, जब तुम बाइक से आते हो, घर से चले, तुमने स्टार्ट की बाइक और तुमने फर्स्ट गियर लगाया, बैठे, अब बाइक स्टार्ट हो गई. अब मुझे गेट पे मिल गए, राइट? पहले तो आपने देखा युगांक सर खड़े, तो आप कन्नी काट के से निकालना चाहोगे बाइक को. फिर भी आपको लगा नहीं, चलो गुड मॉर्निंग करता ही हूँ. आपने बाइक रोकी है. युगांक सर ने आपसे कहा, तरुण एक ही बताओ, कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से आ रहा हूँ. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, तरुण, नाउ टेल मी वन थिंग. जब तुम घर से यहाँ तक आए, तुमने कितनी बारी गियर चेंज किया, कितनी बारी ब्रेक लगाए और कितनी बारी एक्सीलरेटर दबाया? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. गॉड ब्लेस यू. नहीं बता पाएगा तरुण? चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक ड्राइव कर रहे हो, would you be ever able to tell that how many times you change the gear, how many times you press the accelerator or the brake? Not at all.
Not at all. Same way, a communicator is like a good driver. जैसे एक ड्राइवर है, उस ड्राइवर को जो एक अच्छा ड्राइवर होगा ना, उसे पता ही नहीं चलेगा उसका एक हाथ स्टीयरिंग पे है, दो आंखें विंडस्क्रीन से देख रही हैं, both legs in a car for example, वो मैन्यूवर कर रहे हैं आपके ब्रेक क्लच एक्सेलरेटर में, if it is a non automatic car, right? एक हाथ आपका गियर पे लगा हुआ है, एक स्टीयरिंग पे एक गियर चेंज कर रहे हैं, आपके ईयर्स जो हैं वो साथ साथ म्यूजिक भी सुन रहे हैं, उसको भी ट्यून कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आईज की मूवमेंट भी हो रही है, साइड ग्लासेस को देख रहे हो, फ्रंट ग्लास को देख रहे हो, तो देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, और आपको कभी रत्ती भर ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने कितनी बारी एक्सीलेटर दबाया, कितनी बारी क्या किया, कितनी बारी क्या किया, बिकॉज यू आर अ गुड ड्राइवर। और अभी मैं किसी एक ऐसे को बिठा दूँ ना जिसने ड्राइवरिंग आज तक नहीं की हो, जो बहुत ही नौसिखिया ड्राइवर है, उसको एक बारी गियर बदलने में भी ध्यान रहेगा कि मैंने अभी कौन सा गियर बदला था, मुझे फिर अब इस गियर पे जाना है, थिंग्स लाइक दैट। Niyaji can say yes to it, okay? All right, so this is what it is. Communication is such कि आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन से शब्द आपके पास आ रहे हैं, आप एक नॉन स्टॉप फ्लो में you keep on speaking, as a driver will keep on driving till he has to stop, he will stop. Now what is it that somebody can speak like that? I'll just make you understand. This is my age-old photographs, मतलब figure that I have been making for years. थोड़े ही मैं changes ला रहा हूँ उसमें, okay? अब माहौल बहुत बदल गया है कि मैं उसे स्माइलिंग बना देता हूँ. Alright. Now understand. This is a gentleman. Now, what's your name, my dear? You spoke to me. Yeah. Suhani. मैंने आज सुहानी की, सुहानी how did you spend your Sunday? अब देखो सुहानी मुझे नहीं मालूम, BCom कर रही है, BCA कर रही है, 10th में इसके पास 11th 12th में साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, मे बी साइंस था तो मैं कोई इंग्लिश फिजिक्स की पूछता तो शायद बेटर बता पाती, आर्ट्स की हो सकता है हिस्ट्री की नहीं बता पाती, एनीथिंग लाइक दैट। पर मैंने तो बहुत जेनरिक बात की जो आप में से सब लोग बता सकते हैं। 3 दिन पहले सभी लोगों का संडे गुजरा है, आपको सबको ही मालूम है कि आपने संडे कैसे गुजारा, इट इज कॉल्ड अ जेनरिक थिंग। 3 days back, how did you spend your Sunday? Everybody of you knows that. But जैसे सुहानी का था, okay? How did you spend your Sunday? So I went to Noida. And what is over? Okay? सबसे पहली चीज है, आपकी कम्युनिकेशन में आपकी सबसे पहली चीज होती है आपकी थॉट प्रोसेस। जब तक थॉट्स डेवलप नहीं होगी आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। इट्स ओके, प्लीज टेल यू। जब तक थॉट्स डेवलप नहीं होंगी यू जस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट। थॉट्स कैसे डेवलप है आपको समझाऊं। आप सबको सब बोल देंगे, सुहानी ने तो मुझसे इंटरेक्ट करते हुए 2 लाइनर्स बोले। आप सबको I give you a sheet of paper and I say I'll give you 10 minutes to write. Give a sheet of paper to you. और मैं आपसे कहूँगा 10 मिनट अब मैं वो sheet of paper आपसे वापस ले लूँगा। और अब आप सब उस sheet of paper पे you start. You have to write the moment I say write. You will start writing. And topic क्या है? How did you spend your Sunday? Generic topic है। तो सबको पता होना चाहिए, लिख ही सकते हैं। Believe me, मैं जब 10 मिनट्स बाद आपसे आपके सबके लूंगा the sheets, किसी ने 2 लाइनें लिखी होंगी, किसी ने शायद 1 ही लाइन लिखी होगी, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि 1 पेज पूरा लिख करके 2nd पेज के भी लास्ट तक पहुंचा हुआ स्क्रिबल करता हुआ। That is generation of thoughts. किसके अंदर कितनी थॉट्स पैदा हुई, ये सबकी बराबर नहीं होती। This is different amongst people, but one should make one's thought process better, that you are able to generate more thoughts into yourself. How's the weather today? Sir, it's not that humid, so it's a little hot, but still it's much better to what it was yesterday. The other buddy, how's the weather? It's good. Right? Getting me?
नाउ फर्स्ट थिंग इज आपकी थॉट्स। आपकी थॉट्स कैसे आएंगी? सिर्फ दो चीजों से। या तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो, जैसे आपको सबको इस बारे में नॉलेज है कि आपने संडे कैसे बिताया। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप थॉट ही जनरेट नहीं होगी। या तो आपके थॉट आपकी नॉलेज में होगी या आपकी मेमोरी में होगी। वो कैसे? या आपकी दोनों चीजें, आपके संडे जो आपने बिताया या आपके नॉलेज में भी है, आपकी मेमोरी में भी है, तो आपकी थॉट्स जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको शीट ऑफ पेपर दे दिया, मैं 5 मिनट बाद आपको शीट दूंगा लिखने के लिए। जैसे ही आई प्रेस द पेन, यू विल स्टार्ट राइटिंग, आई टेक इट बैक आफ्टर 10 मिनट्स फ्रॉम यू। अब आपके पास जो 5 मिनट है, आपके हाथ में पेन है, आपके अभी आप लिख नहीं सकते, पर आपकी थॉट्स जनरेट होनी शुरू होगी। मुझे क्या लगता है, मैं सुबह देर से उठी थी, जॉब करने नहीं गई थी, आई डिड गिव अ कॉल टू my friend and Monica ने उठाया नहीं था फोन। I tried her after breakfast. Then she said, "Okay, ठीक है, we let's go to the ball in Rohini." We both went. We had a picture also. We saw a picture too. This. आपके दिमाग में सारी चीजें आ गई, मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। These are all generation of thoughts. अब मैं आपसे बोलूँ कि write about the hill station Darjeeling in West Bengal, or maybe Shimla in Himachal Pradesh. जो लोग शिमला घूम कर के आए हुए हैं ना, उनके दिमाग में मेमोरी ओवरले कर जाएगी। ओके, आई वेंट टू शिमला, शिमला वाज गुड बिकॉज़ दिस, ओके, वी स्टेड इन अ होटल देयर एंड दिस द क्लाइमेट वाज वेरी गुड, इट रेन्स क्वाइट इंटरमिटेंटली ओवर देयर, जनरली दिस सीजन इज द बेस्ट इन व्हिच वी वेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कभी गए नहीं हुए, परंतु आपने शिमला के बारे में जानते हैं, सुना है, पढ़ा है, देखा है अखबारों में, न्यूज में एंड ऑल। आप अपनी नॉलेज की वजह से उसके बारे में लिखने लग जाएंगे। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी रॉक है, द बिगेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, वन पीस रॉक, दैट इज कॉल्ड जिब्राल्टर रॉक। और वो रॉक जो है बिल्कुल आपके सिसिली आइलैंड, इटली के साउथ में, मेडिटेरेनियन ओशन पे, एक बिल्कुल जहाँ पर एंड होता है आपका सदर्न यूरोप, वहाँ पर दैट रॉक इज लाइक स्टैंडिंग एज अ पीस ऑफ गॉड। ब्यूटीफुल इट इज, इट्स अ मार्वल बाय इटसेल्फ। इट्स कॉल्ड द जिब्राल्टर रॉक, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट जिब्राल्टर रॉक? जस्ट पुट योर हैंड्स अप। नन। अब मैं आपको एक शीट ऑफ पेपर दे दूंगा, मैं आपसे कहूँ राइट अबाउट जिब्राल्टर रॉक, क्या होगा? पेपर ब्लैंक रहेगा, क्योंकि कोई थॉट आएगी नहीं। जब थॉट ही डेवलप नहीं होगी तो आप कम्युनिकेट क्या करोगे? आपसे मैं कहूँ कम्युनिकेट दो ढंग से हो सकता है, आप लिखकर करें या बोलकर करें। बेशक मैं आपसे कहूँ कि या सोनी गेट अप एंड स्पीक अबाउट जिब्राल्टर रॉक, व्हेन यू डोंट नो यू विल से सर डोंट नो, मैक्स आप लिख कहोगे, आप डम रहोगे। तो सबसे पहली चीज है थॉट प्रोसेस, इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस। अब सेकंड चीज ये है, आपके अंदर मैंने आपको एक शीट दी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आज के पूरे दिन का निचोड़ है व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक टू नाउ। मैंने आपको एक शीट दी, शीट देकर मैंने कहा आपको 5 मिनट बाद लिखना शुरू करना है। 5 मिनट बाद आप जब लिखना शुरू करेंगे, आपके अंदर थॉट्स जनरेट होनी शुरू होंगे। जैसे सर कहेंगे टक एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग दिस, थॉट्स आपकी बहुत जनरेट होने लगी, क्योंकि आपको बहुत कुछ मालूम है, सारे ये किया मैंने, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। शिमला के मैंने पूछा, शिमला ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर जनरेटिंग। मे बी किसी की जनरेशन कम हो रही है, उतना नहीं नॉलेज है, शिमला में उतना सोच नहीं पा रहा क्या क्या क्या, हिमाचल की कैपिटल है, ब्रिटिश टाइम्स की भी कैपिटल रही हुई है, ये एंड थिंग्स लाइक दैट, उतना उसको लिमिटेड आ गया, पर थॉट जनरेट सबकी हो रही है। पर जैसे ही आपका टाइम है लिखने का, मैं कहा ओके द टाइम स्टार्ट्स नाउ, बट यू ऑल हैव टू राइट इन जर्नल। अब क्या होगा? थॉट्स तो जनरेट हो गई है बहुत सारी, लिख आप कुछ नहीं सकते क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आप नहीं जानते, ना आप बोल सकते ना आप लिख सकते। चाहे मैं आपको कहूं कि बोलकर एक्सप्रेस करिए या लिख करके दीजिए शीट पे, आपकी थॉट्स तो इतनी सारी होंगी कि ओके मैंने संडे ऐसे डे टू डे जॉगिंग करने लेगी, ये हुआ ये मुझे सब लिखना था। थॉट्स इतनी सारी जनरेटेड हो गई, बट यू कांट एक्सप्रेस दोस थॉट्स बिकॉज यू डू नॉट हैव कमांड ओवर द वोकैबुलरी ऑफ दैट लैंग्वेज। तो द सेकंड थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोग सब फॉल्टर खाते हैं, if you wish to be a great communicator, including the faculties, I would say, if you wish to be very good communicators, improve the vocabulary of yours, the language in which you have to speak. The language in which you have to speak
if you do not have command over the vocabulary of that language, एक वर्ड नहीं, आपके पास अठारह वर्ड्स आपके दिमाग में आपने रजिस्टर्ड है. योर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर. उसके अंदर जो फीड कर दिया वो उसमें हमेशा के लिए फीड हो जाता है, कभी नहीं निकलता. बट योर माइंड इज लाइक, व्हाट इज इट कॉल्ड, योर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर which comes to you absolutely fresh, nothing is fed. जो आप फीड करोगे वही निकलेगा, जो फीड नहीं किया वो नहीं निकल सकता. आज तक तुम्हें जितने इंग्लिश के वर्ड्स मालूम हैं, सुने हैं, बोले हैं, पढ़े हैं, आप वही निकाल सकते हो. उसके अलावा आपकी vocabulary would not go beyond that. आज युगांक चतुर्वेदी ने कहा कि आप तमिल में बोल दीजिए, कन्नड़ में बोल दीजिए, तेलुगु में बोल दीजिए, मलयालम में बोल दीजिए, नहीं बोल सकता. I will remain dumb, as we all would remain dumb if you ask me to write in German. So that's an Indian language, but I do not know that language that well, that I can speak or write. So, improve the vocabulary. Once you have the vocabulary at the back of your mind, you yourself do not know, your mind is such a beautiful thing. Artificial intelligence की आज हम बात करते हैं, ये God gifted artificial intelligence day one से है. डे वन से जो आपके वेदास लिखेंगे, सब लिखेंगे, तब से मैं मानता हूँ, तब से है कि एक बार ही ह्यूमन माइंड में जो फीड हो गया, वो आप अपने मन से, इच्छा शक्ति से जब भी जो जागृत करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो शब्द आ जाएंगे. Are you getting the point, all of you? जो मैं कहना चाह रहा हूँ. Yes, sir. So that would come automatically in you, and you start speaking. So second thing is very important that you improve the vocabulary of yours, which is so important. I give you a very good example. There used to be a time, now that we are passing a very modern age, but आज से कुछ सालों पहले, when I lost my cousin, my Saka Mama's son, I lost him. The family lost him because he went through this, what I'm going to be talking to you. This is a disease called meningitis. हिंदी में इसको गर्दन तोड़ बुखार. Okay. English word is called meningitis. इसका कोई वो नहीं था, what is called vaccination. आज से समझ लीजिए 20 साल पहले. But in the last 20 years इसका वैक्सीन आ गया, जैसे कि आपका जो कोविड गया उसका आ जाएगा, कोई बिल्कुल डिफाइंड वैक्सीन आ जाएगा. तो एनी टाइम अब जब भी नए बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं उसकी जब वैक्सीनेशन की होनी है तो साथ में कोविड का वैक्सीन भी लगेगा. सेम वे अब जितने सालों से आपका जो हो रहा है उसमें आपका मेनिंजाइटिस का वैक्सीन भी लगता है, जैसे आपका BCG, कॉलरा, इन सब के लगते हैं. न्यूबॉर्न बेबी के टाइमिंग होते हैं, आफ्टर these many days of birth ये लग गए, तो उसमें मेनिंजाइटिस वैक्सीन इज आल्सो देयर. सो डेथ्स, और ये क्या वैक्सीन है? दिस इफेक्ट्स ओनली एंड ओनली, जब अपने टाइम में था और बहुत बड़े रूप में था दुनिया भर में, ये ओनली एंड ओनली इफेक्ट करता था न्यूबॉर्न बच्चों से लेकर के मैक्सिमम 6 महीने तक. मेजरली न्यूबॉर्न से लेकर 4 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक, नॉट आफ्टर 6 मंथ. सिम्टम्स बिल्कुल मलेरिया वाले, 100% मलेरिया सिम्टम्स. तो whenever any parent would carry कि is having high temperature and this ये सिम्टम्स हैं, तो उसको कोई भी डॉक्टर उसे मलेरिया के रूप में ट्रीट करता था और बच्चा ठीक भी हो जाता था. The only thing is कि उसे मलेरिया था नहीं, उसे था मेनिंजाइटिस. और जो मलेरिया की ड्रग्स रहती थी, मेनिंजाइटिस की ड्रग ही नहीं बनी. जो मलेरिया की ड्रग्स रहती थी उससे बुखार एंड ऑल तो कंट्रोल में हो जाता था, परंतु बच्चा का हियरिंग नर्व्स खत्म हो जाते थे. उसका साइड इफेक्ट ये था, the child would become deaf. पहला, the child would become deaf. So, have you ever heard of a school for deaf? Deaf school सुना है कभी? No, sir. No? No, sir. आपने कभी dumb school सुना है? Have you ever heard of a dumb school? Or have you ever heard of a deaf school? Somebody who cannot hear, उनके लिए वो स्कूल है, उन बच्चों के लिए, जैसे वो बोल नहीं सकते उनके लिए वो स्कूल है. डम्स के लिए, डेफ्स के लिए, never in the world. It is always a school for deaf and dumb. Okay? Understand, my children. It is always जितने
दुनिया भर में स्कूल है ऐसे बच्चों के लिए, दे आर कॉल्ड स्कूल्स फॉर डेफ एंड डम, बिकॉज जो डेफ होता है वो ऑटोमेटिकली डम हो जाता है, जिसने कुछ सुना ही नहीं वो बोल नहीं सकता। And getting a point? If a child when he grows and is not hearing anything around him, he won't utter a word. वहीं पर एक बच्चा जो 8 महीने का होगा माँ पा दा सब बोलना शुरू कर देगा, और जिस बच्चे को मेनिंजाइटिस इन्फेक्टेड था वो बड़ा हो रहा है, 1 साल का भी हो गया, उससे एक शब्द नहीं बोल रहा, and then the parents used to get alarmed, as the mommy he got alarmed, and they went to Beach Candy Hospital where this news was given to them that Shini is get meningitis, so he won't be able to do this, and he had his education in Bhavnagar Deaf and Dumb School, one of the most leading in India, in Gujarat. But what to say? This is what it is. तो आपके जो मैं vocabulary की बात कह रहा हूँ ना, जो शब्द आपने सुने ही नहीं, आपने कभी दिमाग में डले ही नहीं, आप बोल कैसे सकते हो? तो पहले रीड करना शुरू करो, read newspapers, read articles in English, start speaking amongst few people, maybe you speak wrong, but क्योंकि आप जिस एज में है ना, मैं कोई इंग्लिश का वो प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इंग्लिश के लिए बहुत आपको वो बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ये करना है वो करना है। We all are Indians, and as Indians, I would say we should have a very great respect for our mother tongue, whether it is Hindi or it is a Punjabi or it is a Malayalam or it is whatever. But the reality is, we were ruled by the British for 300 years, and as a result of that, whatever education system we have today is English-based. And when that is English-based, you're all corporate, you're all working in English-based, और अभी इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं आने वाला कि जिस एज में आप हैं ना, maybe your children may be going to an age जहाँ पर इंग्लिश को हम साइडलाइन कर देते कि पूरा एजुकेशन जो है एक रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पे शुरू हो चुकी हो, जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बेसिक मोटिव भी है जो आ रही है। बट आपके एज में, तो आपके एज में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर दिस लैंग्वेज, and for that you need to have a very good vocabulary of yours. Okay, so this is what it is, what you will read, what you will speak, what you will hear, only that thing will get into your mind, nothing else. Now, so I say you have communication skills, then I say, what is it? You should have here, good thought process. This should be okay. Yeah, this is fine. One is your good thought process. आपकी thoughts generate हो सके, उसके लिए आप अच्छा. One, very good thought process. Two, your vocabulary. Vocab should be very good. Okay. Now comes your speaking skills. That how well you are able to express yourself. आपके अंदर thought generate होगी, आपके अंदर vocabulary का command भी है. Now you want to express yourself. This is the third part of the brain which translates your action, that thing into action. Either you start speaking or you start writing about it. Okay? The third is your expression of the same. So when this expression comes, there's a lot of things. So again, आप लोगों को अपने अंदर improve करना चाहिए. Lot of you people would be having lists. ग्रामर कंट्रोलेबल या ट्रेनेबल नहीं है, याद रखना. आज आप 12 साल की एजुकेशन लेकर के नर्सरी केजी में मान लें तो 14 इयर्स की एजुकेशन लेकर आज आप मेरे सामने बैठे हैं. इस 14 इयर्स में आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो ही रहेगी जिंदगी भर, वो इम्प्रूव नहीं हो सकती. अपने आप जितना कर लो वो हो जाएगी. बट आप कहो कि युगांक सर या कोई उसको ट्रेन करके ठीक करेंगे. मेरी ग्रामर, बेसिक ग्रामर क्या होती है? हाउ डिड यू स्पेंड योर संडे? सर, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, नॉट वेक अप. I get up late in the morning, not get up. I got up late in the morning, I woke up late in the morning. आपने जब शुरुआत ही की है, get up late in the morning, I wake up late in the morning, you are gone. You are absolutely gone. You are gone with your grammar. Grammar is not trainable. वो आप खुद कर सकते हैं, पढ़ के अपने आप को improve करते हुए अपनी grammar कर सकते हैं. बाकी चीजें all are trainable. List is very important thing. This is trainable. What is list? अगर आप जैसे कहते हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंग्लिश स्किल ट्रेनिंग बड़ी हाई लेवल्स पे जो रखी है,
उसमें लिस्ट के कंप्लीट कंट्रोल का मैकेनिज्म्स रहते हैं। लिस्ट इज व्हेन यू हैव, हम सब एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई पंजाबी फैमिली से है, कोई गुजराती से हो सकता है, कोई हरियाणवी फैमिली से हो सकता है, हरियाणवी एक्सेंट उनके मदर टंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। These are all lists, mother tongue influence. This is called mother tongue influence, MTI. This is controllable. बताओ लिस्ट में आपको बहुत ही मजेदार चीज बताता हूँ। आपकी हिंदी और इंग्लिश की जब बात करें तो हिंदी में एक चीज मानता हूँ कि हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। हिंदी की जो वर्णमाला है वो आपकी इंग्लिश की जो लेक्सिकोग्राफी है, A टू लेकर के Z तक, और उससे सारी वोकैबुलरी जो बनी हुई है, और हिंदी की जो वर्णमाला है अ से लेकर ह तक, और उसके जो भी सारे शब्द इतने क्रिएट हुए हुए हैं, दैट इज मच मोर एडवांस्ड विद आवर हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। ओके, वैदिक इरा से चली आ रही है, संस्कृत से इवॉल्व हुई, एंड दिस इज हाउ इट इज। नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन आई से क, आई से ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ग, प, ब, भ, म। आगे का क्या है? ज, र, न, व, क। ओके, एंड whatever. Now listen. And of course, ऊपर रह गई। Now it's about English. English I say A. A का हिंदी है। क्यों? हिंदी में A भी होता है। A गई। Okay. I say B. Where is B? B, E, C, S, E, D, W, E, E, F, A for H, H, G, J, E। जिसने भी हिंदी शब्दों का प्रोनाउंस किया है, हिंदी की वर्णमाला बोली है, ओके, अंडरस्टैंड द पॉइंट, वो इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुली, बेटर टू आई से इवन अ BBC broadcaster he can speak that English. I have stayed in UK, I have stayed in London for years, and believe me, believe my words, the pronunciation of we Indians is so much better even to the Britishers who are from the Isles. जो ब्रिटिश के हैं पर स्कॉटलैंड से हैं, जो मिडलैंड से हैं, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर एंड ऑल, प्रॉपर साउथ इंग्लैंड व्हिच इज लंदन एंड केंटबरी इन ऑल एरियाज। उसके अलावा बाकी सारों की इंग्लिश इज आल्सो नॉट दैट वेल स्पोकन। एज वी से मैडम, जैसे मैम, ऊपर मॉम, यू डोंट नो व्हेन सेइंग मॉम और सेइंग मैडम। So this is how the pronunciation goes wild over there. But our pronunciation is beautiful because we are well used to all these alphabets in Hindi. For example, in North, इधर एक रह गया बीच में, it is ट ठ ड ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ। तो आप एक चीज समझो, ट ठ ड ढ, ज च ज ज, प फ ब भ म, कितना साइंटिफिक है जिसने वर्णमाला बनाई। अगर आप एक पूरी लाइन देखो, just 5 minutes, क ख ग घ ङ, आपकी जीभ आपके ऊपरी तालु पे जाती है, क ख ग घ ङ, और पांचों अल्फाबेट्स में वही जा रही है। इट इज जस्ट द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट टचेस इट, दैट साउंड इज मेड। जैसे च छ, आपकी जीभ आपकी अगले वाले तालु पे लग रही है, च छ ज छ। ओके, द मोमेंट यू से ट ठ, आपकी मुंह थोड़ा सा खुलता है, लिप्स ट ठ ड ढ। The moment you say pa pa ba ba ba, it is the only alphabet which uses your lips to pronounce them. Pa pa ba ba ma. बगैर lips के joining के और खुलने के वो आवाज तब आती है जब आप ये pronounce करते हैं। So this is how it is scientific. It is extremely scientific, all these alphabets which have been made. Now understand. अब आपका एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है, नागालैंड में पढ़ा, मिजोरम में पढ़ा, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में मदर टंग क्या है, जो एमपीए की बात कर रहा हूँ, मदर टंग इज खासी, जैंतिया, दे आर द ट्राइबल पीपल, either they are converted Christians now, they speak English,
or they speak their own language, which is Khasi, Jainti and all those hill areas of Eastern India, Northeast India. Now, वहाँ के बच्चे में उनकी lexicography में there is nothing called ट है ही नहीं। जो हमारी हिंदी में ट है, क्योंकि हमारी इंग्लिश की कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो कि इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हो, जो हिंदी बोलने वाला उसने प्रोनाउंस नहीं किया हो, उसने 150% प्रोनाउंस किया हो, तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक बोलेगा। पर नॉर्थ ईस्ट का बच्चा जो है उसने कभी ट बोला ही नहीं। जब वो 12th करने के बाद he goes to Calcutta for his higher education to the college, and when a student is speaking there, it is the problem of the country. वो क्या बोलेगा? वो ट का नियरेस्ट पे जाएगा और ट का नियरेस्ट इज ट था द ना, वो ट था द था ना में रह जाएगा। उसके लिए ट जी बुद्धि रोल ही नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से की नहीं आता, ट बोले ही नहीं है, वो तो ट पे रुक जाएगा, ट तक जाएगा नहीं, ट पे रुक जाएगा। It is the problem of the country. You speak like this. You will not speak. It is the problem of the country. He knows it is. इसको नहीं बोलना है, इसको country बोलना है, और जब वो बोलेगा उसके मुंह से निकलेगा it is the problem of the country, he will say it is the problem of the country. So this is what is called list. List को आप control कर सकते हैं। Alright, last things I would say and wind up this. Communication. Second thing. Close the door, please. Just 2 minutes. This is extremely important. This is one word which makes you or breaks you. So I don't want to speak more on it. I can speak for hours on this single word called attitude. मेरी खुद की कंपनी रही हुई है before I came here, and n number of people working with me. My only principle was to my HR people, make anybody join my company, I'll train, make that resource grand. Or literally it happened like that. Whoever worked with me for any time, they are all so well settled abroad and here and there. I only pick them and put here and there. जब मिला मेरी कंपनी ने तो फाइनल तक पहुंच गया, इसके आगे ग्रोथ नहीं है, खुद ही उनको मैंने आगे कर दिया। But one thing I was always clear, why I'm saying this to you all is कि मेरी कंपनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, एक व्यक्ति भी नहीं आएगा जिसके फालतू का एटीट्यूड। Attitude is one word which can make you keeping the right attitude and keeping unnecessarily, an attitude around you which is just, rhetorics about you. यहाँ पर आपको अपने बारे में egocentric हो, you look down upon others, you blast on others for no reasons. That is not the right thing. You must carry the right attitude. This is very important. In my sometime next interactions, I'll speak in details and give you some beautiful stories about attitude. You'd love those stories and would understand literally cause attitude. बेटा unnecessarily attitude है। आप एक इंटरव्यू पे गए हुए हैं, इंटरव्यू पे जाकर के आपका दरवाजा खुला and दरवाजा बाई चांस उसका डोर क्लोजर वर्क नहीं कर रहा and the दरवाजा में it struck the wall and made a noise. You entered the room. You're not bothered to even say sorry. I'm so sorry. बेशक आपकी गलती नहीं थी, डोर क्लोजर ठीक नहीं था, but a courtesy demand करती है इसे, I'm so sorry. आप जाकर अपना रिज्यूमे दे रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को and you're giving it like this. लेना है, okay? That's absolutely attitude. You're taking it so casually. You have walked into your interview room. अभी 2 साल बाद आ जाओगे बच्चों, इसके अंडरस्टैंडिंग से करना शुरू कर दोगे तो बहुत चीजें ठीक रहेंगी. You have walked into your interview room and you have come in your shoes as if you're going for jogging. You're taking my company very lightly, boss. घर में तो होगा जो होगा, दादा तेरा कुछ भी होगा. मेरे कंपनी में I'm going to be your employer and I'll employ you only when I wish you. Very straight philosophies these are in the corporate world. इसको आज से समझना कोशिश शुरू कर दो. Unnecessary attitude अपने बारे में carry करके जाने से कुछ नहीं मिलने वाला. I'll give you n number of beautiful things of my own experiences wherein I've seen people rising from here to here because of carrying excellent attitude, and people rising, sitting over here and falling overnight over here because they just had unnecessary attitude about themselves.
Because there's an old saying that there's always a chance when you play with three words, which is called attitude, which is called altitude, and which is called aptitude. And when you play with these three words, there's an old saying. मुझे मालूम कहाँ आ रहा है? लॉ मालूम है ना? Just finishing it. Attitude, altitude, and aptitude is what it says. There's always a chance that somebody with great aptitude, आप बहुत intelligent हो सकते हैं, maybe you're a gold medalist in the university. No two doubts, gold medalist हो, aptitude तो होगा आपके अंदर जबरदस्त. So there's always a chance that somebody with great aptitude, but some attitude, but attitude भी है बहुत अपने आगे air लगती हुई है फालतू में. Shall never scale the altitudes of life. Like the altitudes of heights हम उनको नहीं touch करोगे. And last that I would speak is, there's no time now. There's another program here. I was to recite that also, but मैं बाद में आऊँगा उस program में. Energy. Last thing, and I'm concluding with this. You all should have very good energy in yourselves. You're young blood, young people. You know, sparkle with energy. Energy आपकी पूरी body, personality, उससे ooze out होनी चाहिए. The day that oozes out, that means you have the right aura within you. The right aura within you is expressed outside in the same way as I just said to you, that is the energy in you. And if you're doing that so, you're just absolutely on the right track. When you go to all these religious places, don't you feel that something touches you? Whether you go to a Gurudwara, or you go to a mandir, or you go to a masjid or a church, inside कुछ लगता नहीं कि air है, एक air आपको touch करती है. Something that peace, कोई अजीब सी चीज है, पर peace तो बहुत जगह मिल सकती है, पर वैसी air नहीं मिलती जो आपको बाकायदा छू रही हो. कुछ नहीं है, उसके अंदर की energy है, और उस energy में positivity भरी हुई है. क्योंकि कोई कितना ही गंदा इंसान क्यों ना हो, वो जाएगा ही नहीं मंदिर. He will not enter the temple. But the moment he says, okay, I am going to the temple, and the moment he has taken his slippers out, and he washes his hands and he washes his feet, he is a transformed person. He is a transformed person. He enters inside with a positive feel. उससे पहले लाखों करोड़ों लोग उसी मंदिर में आकर के जा चुके हैं, उसी positive feel के साथ, and when they are leaving that, they leave that positivity over there. So I am not disputing कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या आपके रामचरितमानस जी या आपके गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ पर है, तो उसकी वजह से बहुत ग्रेटनेस नहीं है, बिल्कुल है, वो भगवान है. परंतु जो भगवान को पूछने के लिए जा रहे हैं, वो इंसान भी उतना ही पॉजिटिव होकर के जा रहा है और अपनी पॉजिटिविटी को वहां छोड़ आता है. और वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको छूटती है जब आप जाते हो, क्योंकि आप जिस पॉजिटिविटी जा रहे हो उसकी स्पार्क कितनी है, उसकी और एनर्जी इतनी है, बहुत इतनी है, तो आपको दबाती है. एंड यू कैन फील दैट एयर. दैट इज कॉल्ड एनर्जी. सो दिस इज वेयर आई थिंक यू ऑल वांट टू हैव योर लंच. So we will conclude it here. Now my only submission to you all is, I hope you liked it. And in case you wish to proceed from here further, sometime in the chill, that is sometime a month down the line when it will be more cold and without the AC it will be more comfortable here. So that day we will have another PDP, and I'm very sure we'll have grand times. Okay? The two, three people who were there, then just immediately come up and accept this. Anshika Arora, please. Anshika and Somani. Anshika, Somani. We also have Gargi, Dhawan and Sham Jain. Gargi, Dhawan, who's that? Gargi, Dhawan and Sham Jain. Oh yeah, F5? No, no. F5? Okay. Hi, Shika, congratulations. God bless you. Yeah. Please. There's small organized from the college. Clap, please, for her. Keep coming here, please. Sohani. Nagat, come here. Why don't you leave it? Oh, please come. Gargi.
Congratulations, Darwin. And congratulations, Nishant. One more. Yeah. दिया जाए? Keep it up now, okay? Remain good. Let's have one joint photograph, please. आपकी आगे Yeah, pass. Thank you so much. I hope you all liked it. It went off well. Yeah. Thank you.